Ladies and gentlemen, welcome back. आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन था between England and Pakistan. Pakistan have finally given us a hope जाके हम जहां से हमें अब ये लग रहा है कि ये टेस्ट मैच अब हमारे पास ही है, बट अभी भी मंजिल हमारी थोड़ी सी रहती है. आज देख इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे कि साजिद ने कैसे गेम टर्न की, इंग्लैंड से कहाँ थोड़ी बहुत गलतियां हुई, कैसे हम इस टेस्ट मैच को कल लंच के आसपास रैप अप कर सकते हैं और हम ये जीत अपने पास लेके आ सकते हैं. सो इस पे हम डिस्कस करेंगे. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. वी हैव गॉट अदर एक्सपर्ट्स विद अस इन द स्टूडियो, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. लेट्स सी हाउ इट गोस. So let's get started, I think. What do you mean to say? You got a other expert in the studio. You're expert too, right? No, I'm not. I'm just a fan. This is my view. I'd like them to wrap it up by lunch. No, you're an analyst yourself, yeah. Why not? Stand by it. Sorry to run you down, but I'm saying I think Joe Root and I think Lollipop is not going to give you a lollipop. They're going to make you run for the money. Yeah. But Pakistan is winning the series. That's what I see. Pakistan will this win the series. Series, not just It this is test winning match. the series as we speak. Wow. I think Pakistan is winning the series as we speak as well. Right? इसमें So, I- इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो लीड लिया, लीड इज एक्चुअली द ट्रिक ऑफ द ट्रेड वाज द लीड. Right. बस अदरवाइज आपने 200 करना था और 200 जो रूट ने नहीं छोड़ना था. True. आई थिंक एंड में जो सलमान आगा की वही जो 9th विकेट पार्टनरशिप थी, जिस तरह से हमें लग रहा था कि अब ये ऑलमोस्ट 300 की The लीड two मिल drop जाएगी. catches actually जी, cost them very dearly. बिल्कुल. Exactly, that's what it is. Let's take a good look at the match summary very quickly as of what has happened, ladies and gentlemen, in the three innings that has taken place. And fourth is going on. Pakistan, the first inning, scoring 366 with Kamran Ghulam with 118 debut century and Leach with 4 of 114, 838.3. England comes back for the first inning. It was Duckett with a century as well. And then it was Shahzad with phenomenal bowling, 7 wickets, gave away 111. It's a little expensive, but when you have 7 wickets, I believe it's justified. Pakistan comes back. Not everybody was able to score well. Either it was Salman Ali Agha or either it was Kamran Ghulam, who actually did contribute quite a lot on the top, but it was Shoaib Bashir, 4 of 66, 19. Finally, Shoaib Bashir actually got hold of the wicket too as well. Made sure he's going to take that advantage. For now, England is obviously 2 wickets down with Pope, 21 not out, and Root, ladies and gentlemen, on the other hand. I think the partnership has been somewhat around 35 or 40 runs, and Shoaib actually tells us they're going to make us run for the money. England needs 261 runs. Pakistan need 8 wickets. What is possible on this wicket is my question to the legendary Mr. Shoaib Akhtar. 261 run या 8 विकेटें. 8 विकेट. 8 विकेटें. Are you winning by margin of और पीर साहब देखना कुछ 30 runs? आमद हुई है. कितने 100? 30 runs. 30 runs. नजदीक ले गए आप. नर्वस कर देंगे आप. Yeah, it's gonna be a tough call tomorrow. Pakistan needs to play really their heart out to win this match. I think they're gonna. I mean, it's gonna be a long day for Pakistan. Yeah. But if they does do that, अगर ये करते हैं कल और टेस्ट मैच शिफ्ट हो जाता है मुल्तान में, पाकिस्तान is what 2-1, and that is going to be a great for the scoreboard and the history and for the Google part. Exactly, and even for our test rankings as well, which dropped to the lowest since 1965. Let's take a good look कि जब अब टी के बाद पाकिस्तान ने वापस इनको बारी दी इंग्लैंड को, तो उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की. सिर्फ नोमान और साजिद को ही उन्होंने लगा के रखा फॉर दी अटैक, एंड दे वर एबल टू गेट दोज अर्ली विकेट्स. अब कल को यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. इट वाज अ टॉप एज, इट वाज अ ग्रेट कैच एज वेल बाय द कीपर हिमसेल्फ. When Duckett gone for a duck. ये ओहो. गुस्सा तो एग्रेशन तो उनकी गुस्सा ऐसे लग रहा है जैसे 160 पे करा रहा है. उनसे कल पूछा गया था कि आपका एग्रेशन कहाँ से आता है, वो And मैं then it आपको was इसके बाद Noman बताऊंगी. chipping in. My God. And you know, Noman's change of pace really helped him with this delivery, and that is what got him the wicket. Yeah. Yeah. मैं क्या सी ना एंड विकेट लेनी है. बोला एक्सप्रेशन सी का है. जी सर. So this is where we at. This is what we did. You know, आखिरी 11 ओवर्स जो थे. और वैन अब डकट ने वही काम किया जो करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नॉट रियलाइजिंग कि बॉल नया है, जी पेस फर्क है, वो मिस टाइम कर गया. True. हालांकि ये बॉल पुराना होता तो इसने फटे में मारना था बॉल. एग्जैक्टली. अब ये हमारे लिए रिस्क भी हो सकता है कि कल सुबह को जब हम आते हैं नए बॉल के साथ विद स्पिन. नहीं, आई थिंक पाकिस्तान विल डू वेल. क्योंकि एक तो इसकी पेस बहुत अच्छी है साजिद की ना,
तेज़ करता है, जान है. माइंड यू शोएब बशीर के फिगर बुरे नहीं हैं. 4 for 66 on this track. Yeah. Not a bad figure, but of course, with a bit of a help of the pitch. But I think the crucial part is going to be Sajid. The crucial part is going to be Naman and Zaid chips in. That is also very crucial for Pakistan team. But I think Pakistan should be able to wrap this one up. लेकिन ये कि अब Root is a great player. Is a great player. I mean, like, आपका the heart is going to be in your mouth. Yeah. Let's put it this way. Exactly. But you will win the test series, inshallah. आपने रूट की बात की. कल आई वाज वाचिंग अ वीडियो, दे वर शोइंग अ कंपैरिजन बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड रूट, और उनका जो आर्म की जो पोजीशन होती है एंड द वे दे प्ले अगेंस्ट स्पिन. सो व्हेन अब्दुल्ला इज प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन, और जब वो बॉल को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो वो उनका आर्म, आई मीन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई वाज जस्ट please go for it. तो वो अपना जो राइट आर्म है वो उसको लूप करके आगे फ्रंट की तरफ लेके आते हैं, उसी से उनका वो मिस होता है और वो पीछे जाके विकेट्स पे लगता है. वाइल रूट, his bat is straight consistently, and that is how he blocks the ball and he is able to deflect it. And he is able to put his bat in front of his pads. जी. And where you're saying is that, you know, वो square हो जाता है बॉल बिल्कुल. पहुंचने के लिए, वो बल्ला सीधा करने के लिए अपने आप को स्क्वायर करता है और सामने लाता है. Exactly. Otherwise, it has to be the bat has to be there in front of the pads in terms of बल्ला आपका फेस करता हो. ठीक. I'm not an expert in the batting, but you know that's what I think. Exactly, and in addition to this, I think what we really need to kind of talk about कि अगर पाकिस्तान एक ऐसी खुश आइन पोजीशन पर मौजूद है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम अब शायद सिर्फ मैच ही नहीं सीरीज के ऊपर आए कर रहे हैं. I think हमें सलमान अली आगा You की should play like this. है ना? You should always play like this. That we need to win this series, but before that we need to win the day. Yeah. It's too early in the day to say that, you know, tomorrow that we're going to win the match or not. But I'm just saying, sleep with the kind of a attitude that, you know, you're going to win the series. But for that, we need to surpass this day that we are going to play tomorrow. True. Right. That is very important. Agreed. और ये इन्होंने easy हो जाए, हम relax हो गए. Exactly. But easy की बात नहीं, but it surpass this day. And then somehow, when you're going to manage this, we have to manage this day. Or how well do you manage it? Because that you, I think, you know, winning is very important. It's the way you win. Right. The test match is going to set the tone for the third test match. If you hammer them down as a Pakistan team to England, let's say यार कि हम आपको collectively, cheaply and very economically we're going to get you out under 100 runs. Okay. It's going to leave a huge dent for them to come into third test match and to face us. True. Because once we played the last test match in Lahore against England, I remember, they were just gone. They were just gone. They said, यार मुक्के test match यार किधर फंस गए. So Pakistan, I think, स्कंजा कस लिए, go for kill. I think go for the kill, ladies and gentlemen, and that gentleman who actually helped us. Well, in fact, it was the 9th wicket partnership, which actually Maheen even spoke about as well, you know, right at the beginning of the program. I think let's move on towards how Salman Ali Agha took advantage of today's game and made sure that he's going to dominate the day with the bat. You know, earlier it looked like as if, you know, he wasn't really comfortable, but then gradually he made sure that he's going to maintain his position, add runs to the board. And he played on merit, you know, so he made sure कि कोई ऐसी loose shot ना खेले, which can get us into a risky condition, क्योंकि ये 60-65 रन जो उन्होंने contribute किए are the most crucial runs. क्योंकि शोएब भाई ने सुबह में भी बात की थी कि यार हम 75 रन से की लीड होगी हमारी, हम इनको आउट कर लेंगे. 261 रन अगर अब इंग्लैंड को चाहिए तो उसके अंदर अगर जो 60 रन की इनकी क्रूशियल कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें साजिद ने भी उसके बाद 22 बनाए तो 80-90 रन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. वाज ब्यूटीफुल. बिल्कुल. और शहजाद, जिस तरह हमने पहले भी बात की हुई है, जो रूट की जो बेन स्टोक्स की कैप्टनसी है, जिस तरह से वो अगले प्लेयर को प्रेशर में डालते हैं, उसी पे सलमान ने बात भी की थी कि दे वर ट्राइंग टू कीप मी ऑन स्ट्राइक, बट मेरी यही कोशिश थी कि रादर देन बिग शॉट्स के मैं सिंगल्स डबल्स के साथ भी स्ट्राइक रोटेट करता रहूं, और उसी से फिर आई आल्सो कीप पुटिंग रन्स अप ऑन द स्कोर बोर्ड. इसमें जो सलमान अली आगा की एक और कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि चूंकि दूसरे एंड पे आपके पास एक ऐसा फुल टाइम बैटर मौजूद नहीं था जो स्कोर कर सके, सो ही ऑलवेज कंट्रीब्यूट किया. Does he care? He doesn't. His concepts are very clear. वो पहले टेस्ट मैच में भी ऐसे ही खेला था, remember? Yeah. He doesn't care. That he has a very good mindset, उसका attitude बहुत अच्छा है towards the batting. Secondly, his concepts are very clear when it comes to have a clean hitting. ठीक. अगर उसकी strength देखोगे, वो जो लप्पे कहते हैं ना, लप्पे नहीं मारता, clean hitting करता है. Excuse me. I think
this guy is like can be an asset for you in the shorter format as well. And exactly, he's an asset, and he's proved that as well. Salman Ali Agha, very recently we have seen, the way that he's been with the bat, and not just that. I think जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था, वो बात मैं आपको ये करना चाह रहा था कि he made sure कि अगर साजिद दूसरे एंड पे खड़ा है तो साजिद भी हिट कर रहा था ना, कोशिश कर रहा साजिद था, भी मार रहा था, लेकिन कम से कम स्ट्राइक दे रहे थे थिंग इज ना, साजिद एटीट्यूड इज वेरी सिमिलर टू सलमान अली आगा. He doesn't care. उसको. I just want to play. Actually, what he's trying to do is that I am also an important player with the bat too. हाँ That's what he's portraying, जी. which is a good thing. उसने ऐड तो किए ना, 22-23 रन तो दिए, किए ना, बिल्कुल किए. तो 22-23 को जोड़ो ना सलमान अली आगा के साथ. 80-90 रन बनते हैं. Exactly, the partnerships. बिल्कुल. मैंने कल यही कहा था, partnerships. You see, this kind of people, जब आप इस किस्म के लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं ए दैट इनकी प्रेजेंस नजर आए, दूसरा दे आर मैच विनर, सेकंड दे आर हंग्री फॉर सक्सेस, Yeah. and they are not selfish player. And these are the people that you need more often in the team than anybody else. Exactly. I'm sorry to say this, but these are the match winners. Salman, Kamran, Sajid. Who are those people? कितने मैचेस खेले उन्होंने? कम खेले. Why are they taking the responsibility? जिन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, they should not be taking the responsibility. True. Hats off to selection committee. Well done. Good job. You done the right thing. And it was obviously a brave decision as well, because as soon as Akib Bhai came in, I think that it was the bravest decision that he's taken. He should be coach plus selector. Okay. Okay. Akib Javed should be coach plus selector because he is a tit for tat. He is really strict when it comes to, ठीक है यार, अगर तो आप बड़े ब्रांड हो ना तो आप करिए, जीतिए, हम आपके पीछे लग जाएंगे सर. हाँ, लेकिन जब तक नहीं करें. लेकिन जब आप नहीं करोगे और सेल्फिशली खेलोगे, that he's going to be a ruthless guy to deal with. And I'd like to second that. यहाँ पे हमें ये नजर आया कि finally after a very long break 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने लिए नहीं, वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं. They're playing for cricket, for the sake of cricket, not for themselves. और that too is that they are very very young players who 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले. Who takes that responsibility? True. But with our times, in our times, we used to take responsibility even during the first test match, third test match, fourth test match हम जिताते थे पूरा test match, आधा नहीं, पूरा test match. So I think finally we got to see that vibe, कि यार एक unity नजर आई, एक लड़का को लड़ रहा है, ठीक है, aggression है यार, क्यों ना करे, आंखें उसके पास बड़ी हैं तो वो दिखाएगा ना, तो वो ठीक है, दिखाए आंखें. और वो दिखानी भी चाहिए. मेरा ख्याल है हम आपको दिखाते हैं 7 विकेट उन्होंने पहले इनिंग्स में लिए, एक अब ले चुके हैं. मेरा ख्याल है ही इज ऑन फॉर अ रिकॉर्ड. मैं आपसे पहले भी ये जिक्र करी थी उनके एग्रेशन के हवाले से. उनसे कल पूछा गया कि आप इतनी एग्रेशन कहाँ से लेके आते हैं. वो कहते हैं जी मसला ये है जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ मुझे ड्रॉप कर दिया जाता है. एंड ही वाज स्नब्ड ऑन दैट, और उन्होंने दोबारा वो बात अपनी रिपीट की. सो आई थिंक समवेयर दैट फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू प्ले फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया था, जिसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था. एंड आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स अ स्पॉट. बट इज आई थिंक व्हाट वी रियली टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट ओवर हियर इज कि क्या हम इस कंडीशन की वजह से इतनी अच्छी इनकी बॉलिंग देख रहे हैं, या दैट्स व्हाट ही इज. जैसे शोएब भाई ने कहा कि यार तेज कराते हैं, लूप अच्छा देते हैं, थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी होता है इनका, गेंद ब्रेक भी हो रहा है, राइट एरिया में भी पिच कर रहे हैं. अगर पहले टेस्ट मैच की पिच होती और साजिद होते तो क्या यही विकेट्स ले पाते? आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी द क्वेश्चन ओवर हियर. शहजादा जी शोएब भाई. He's a good enough spinner, and he has a pace, he has a zor in his shoulder, he pushes the ball through in the air, and plus with a bit of a help of the track, and he able to create the magic. I think he's the one who actually won your test match. Yeah. He's the actually one who actually won you. If you're going to win the series, he is the one actually who won you the series. Actually, sorry, 3 guys: Kamran Ghulam, Sajid, and Salman Ali. Yeah. They contributed for you to win the series, by the way. And they had no responsibility. You cannot ask them to, win the series for you. But they took the responsibility. But he's a good enough spinner. And I think the third test match is pretty obvious हो चुका है. Pakistan is going to do. It's very टॉप ऑर्डर में कुछ simple. चेंज देखते हैं आप थर्ड टेस्ट मैच? वैसे तो बहुत ही फार फ्लैश क्वेश्चन है, लेकिन थर्ड मैच में टॉप ऑर्डर में आपको लगता है कोई तब्दीली की गुंजाइश है? I don't think that after winning this test match, वो नहीं run of the mill चीज करेंगे. Right. But if Saqib steps in, I might take an odd decision, and why not? And why not? Gee, I think let's move on to what's going to actually hurt England the most. The drop catches, ladies and gentlemen, have been highlight of today. And
आई थिंक एक ही ओवर में पहले सलमान अली आगा के आप 2 कैचेस ड्रॉप करते हैं, उसके बाद फिर लेटर ऑन भी जाके आप उसका कैच ड्रॉप करते हैं. लुक लाइक एज ए वो टीम जो कि वाकई पाकिस्तान को प्रेशर में हमेशा कंटेन करने की कोशिश करती रही है. आज पाकिस्तान ने उनको ऊपर डोमिनेट किया है, नॉट इवन वन सेशन, आई थिंक ऑल थ्रू आउट द डे. जी, yeah, look at that. My God, it hurted them the most. Ben Stokes looked frustrated. स्मिथ ने जो कैच ड्रॉप किया उस पे बहुत एक हल्की सी निक थी, और वो ऑब्वियसली वो जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि वो उनसे उठा ही नहीं गया इन टाइम. सो यू नो ही काइंडली गॉट स्टक व्हेन ही कुडंट रीड द बॉल, और वो उनसे रिफ्लेक्सेस उनके शायद काम नहीं किए टाइम पे, और उनसे वो कैच छूट गया. 15 दिनों में 2 टेस्ट मैच खेल गया. हाँ. It's too much to ask from your body. True. And you're bound to get stiffer. And I think it's a learning curve for him. You know, the fitness का टेस्ट भी हो गया, गर्मी का भी हो गया. You know, वो pretty much ground आते हैं, होटल जाते हैं, ground आते हैं, होटल जाते हैं. And you know, the Englishmen are not used to these kind of Yeah, things. they're You know, not. they like to go out every night, you know, to have a meal. You know, not necessarily they have to do anything, but you know, they go out. उनका culture है. बिल्कुल. ये culture है उनका. But you know, it's tough on them. To just You stay know, in. to stay in, coming back, sleeping, wake up, play, come back and sleep. Englishman does not work like that. उनका एक culture है. मैं जैसे county cricket में culture होता है ऐसे. हम used to go have a shower, change yourself, go to Go the out, yeah. you know the clubhouse. You have to meet and greet with the people and the fans, and you have to talk. And then they take out you know their respectable partners for dinners and everything. वो इस तरह जिंदगी गुजारते हैं. But for them is you know It's tough. it's tough. It's really tough. Maybe ask me if you put me in this kind of environment. आपने 20 दिनों में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, 22 दिनों में, तो it's going to be very tough. So I think my admiration for England team is a lot, and I think is one of the nicest guy that we come across is Ben Stokes. Exactly. He's one of the nicest guy. I mean, another is a one gem of a person. I think great guy who actually helps people, helps cricket, and at the same time he makes sure you know cricket thrives with his presence. Right. And at the same time you have a smiley face like Joe Root. Joe Root, exactly. What else you can ask for? And not just that, I think in addition to this पहले टेस्ट मैच में अगर हम देखते हैं तो Ben Stokes was making sure कि उनके टीममेट्स को ठंडा पानी मिल रहा हो. He was going around making sure everybody's comfortable. It's signs of you know it's a signs of a good upbringing. Yeah. It's a signs of a good system. That's simple as that. Yeah. You know उन्होंने काबिल बंदे को कप्तान बना दिया. जो इतना ही deserve करना है ना, इतना ही करना होता है जिंदगी में. एक काबिल बंदे को उठा के उसकी जगह पे लगा दो, वो सिस्टम ठीक कर देगा. सिस्टम कोई एआई का नाम तो नहीं है ना जो ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोनमस चलेगा, जैसे वो जैसा बाकी भाई ऑटोमेटिक चलेगा. सिलेक्शन कमेटी में आ गया. Exactly. You put the right people in the right spot and they will that's function it. for you. Yeah. And the whole system will function for you. It's that simple. इसमें कितनी की rocket science है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है. That's it. अगर लग जाए तो. That's it. ना लगे तो पता नहीं बात क्या ये नहीं, सोचते हैं. वो अब वो टेस्ट क्रिकेट भी सेव कर रहा है, टेस्ट मैच भी सेव कर रहा है, और रिस्टोर भी कर रहा है शोएब बशीर को कि यार नहीं तुम्हें 5 विकेटें ले लेनी चाहिए. मैं देख रहा हूँ, क्रिकेटर समझता हूँ ऐसा कि क्यों 2 ओवर एक्स्ट्रा दे रहा है उसको. यार रन से आ रहे हैं, टेस्ट मैच हार जाएगा. हैज ही बीन अ सेल्फिश गाय? No. तो this England cricket team is a bit different. Build back together. I Exactly, think that's what you they're know. doing. So this is a upbringing, culture, environment. It shapes you. Exactly. So very quickly, obviously, we have the 2 Englishmen on crease. We have got Noman, Sajid, Zahid, and there's Ahmed Jamal. What do we need to do from here onwards? Take wickets. That's it. That's it. Don't be defensive. Don't worry about the runs. Just go out there and take wickets. But please don't drop catches because catches will You win have us a just. matches. You don't have to play a 5-day test match. You just Right. only have 2 more sessions to go. That's it. You'll have a good long break. I mean 3 to 4 days time and up to 5 days time. Yeah. Have a good time, yeah. Go back to your bed with the happy feelings in terms of यार we won the test match. Okay. मैंने कितनी विकेट ली हैं? 12. Did I help Pakistan? Did I help Pakistan to win this series? Yes, sir. Yes, I did. Yeah. It's a great feeling. But this is what the kind of feeling that you should take home and go to bed. Wonderful. You want to say something? No, I think he said it all, and I absolutely second him. He said England is going to put pressure on them. It's not going to be a cakewalk for Pakistan. From here onwards, they just need to get a hold of their nerves and play good cricket, and Yeah. that's all. और 30 रन की लीड से जो है वो पाकिस्तान जीतने में इंशाल्लाह जो है वो कामयाब होगा. They will make us run for the money. Joe Root's there, Oli Pope's there.
So let's wish our team and obviously the Englishmen all the best as well. Thank you so much, Mr. Shoaib Akhtar, for being with us. Lovely to be in conversation with you, just like always. And for everybody who's out there, time for us to wrap it up, ladies and gentlemen. Until next time, look after yourselves. 1, 2, 3. Game on air.